अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू डे 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो सेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम तीसरे दिन में आ गए हैं। तो मुझे पता है कि एक दो दिन जो है वो इस तरह गुजरे हैं कि जिसमें 2 घंटे हम पूरा टाइम नहीं दे सके ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। बट स्टिल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यार स्टिल मतलब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में। और काफ़ी और चीज़ें भी इसके साथ करनी होती है, वीडियोस भी एडिट करनी है और बाकी चीज़ें भी करनी है, तो इस वजह से कभी टाइम का भी इशू हो जाता है और थोड़े और काम भी होते हैं। खैर, अब अब आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो आज डायरेक्टली जो है हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे आज इधर से ही। या आपके सामने ओपन है। अब बस लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब इसको मैंने प्राइम कर दिया था, तो अभी मैं इसको बोलता हूँ कि डे 3 इज़ ऑन, और उसके बाद चैट में सवाल शुरू करेगा और मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। उससे पहले फाइल सेव क्यों नहीं करते? फाइल को नहीं, पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद में सेव कर लूँगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने कोड वर्ड दे दिया था। इसको मैं लिख देता हूँ कि डे, ये इसी तरह ही करके डे 3 is डे 3 is on। ठीक है, अब चैट का पहला सवाल आएगा। I am switching into business stakeholder now. Audience context. We are no longer just viewing data. We are starting to ask business questions. इसको ट्रेन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको समझ आ गई उस्ताद को। चले, पहला सवाल है कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से दिस ऑन द स्ट्रीम। ठीक है, आई वांट टू लुक एट ओनली a specific group of customers before making any decision. Task from dimension customer table, return customer key, first name, last name, gender, but only focus on customers where gender is male. Okay. Rules: use only select from and where, no grouping yet. Write the query live, explain your logic and send it here. When we are done, I will review it, move forward. अच्छा, तो ये कह रहा है कि यार मैं देखना चाहता हूँ एट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को मैं देखना चाह रहा हूँ। और इसमें कह रहा है कि यार आपने जो टेबल रिटर्न करना है वो ये है, और बट ओनली ऐसे कस्टमर्स जहाँ पे जिनका जेंडर एम है। मतलब फ़िल्टर लगा के ये वाला करना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले लिखते हैं, मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि भाई पहले सेलेक्ट ना करो, पहले कहाँ कौन सा टेबल। सबसे पहले तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? टेबल। जो मैं करता हूँ, मुझे मेरी ट्रिक है वो यही है। एफ फ्रॉम फ्रॉम अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या हो गया? ये इसको ज़रा सेव करते हैं यार, इसको सेव, कंट्रोल S, इसको सेव करते हैं। डॉट सीक्वल डे 3 लिख देते हैं इसको, ताकि डे 3, एक दफ़ा इसको सेव कर लेते हैं ताकि परेशान ना हो। डन हो गया जी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो तरीक़ाकार है, जो ट्रिक मुझे, मैं समझता हूँ कि यार वो बड़ा वो है, वो ट्रिक बड़ा फ़ायदेनाक है, और वो है ये वाला। लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं ज़रा चेक कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा था, चेक करना होता है ना। अच्छी अच्छा वो व्यू आए। तो खैर, अब ये है कि सबसे पहले जो मेरा तरीक़ेकार है, जो मैंने आपको बताया, वो है फ्रॉम वाला। FROM, कि मैं फ्रॉम से इसको लिखता हूँ। इसको मैं अभी लिख देता हूँ, एक मिनट।
टीम कस्टमर, ये उसके बाद यहाँ पे ऊपर हमें लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट हमने क्या क्या करना है, सेलेक्ट करना है कस्टमर, सेलेक्ट में क्या क्या करना है, कस्टमर की, ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद द लास्ट नेम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद है जेंडर, जेंडर, ओके। अब इधर आके हमने करना है ये, मोस्ट प्रोबेबली नहीं नहीं ये याद है ये जो कल की गलतियाँ की थी हमने, यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, इसको अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे है कि ओनली फॉर कस्टमर्स जिनका जेंडर एम है। अच्छा, अभी फिल्टर किस तरह, इस पे कैसा करेंगे, वेयर, जहाँ GENDER जेंडर इज इक्वल्स टू एम, जिनका जेंडर मेल है। नहीं नहीं, फिर वो लगाना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ, अब ये कुछ इशू लग रहा है, इसमें कुछ इशू आ गया है। ये इतनी रेड लाइंस ये खतरनाक है। कस्टमर सेलेक्ट, कस्टमर की रिटर्न करना, ये तो ठीक है। ये फ्रॉम भी ठीक है। जेंडर में ये फिल्टर लगाया है, यूज़ ओनली फ्रॉम सेलेक्ट, और ओके। इस पे थोड़ा सा दोबारा देखेंगे। कस्टमर की लास्ट नेम, जेंडर, वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एम, फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर, फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर, वेयर। इसका एक और चीज़ चेक करते हैं ना, क्योंकि अब लाइव है ही, तो इसमें एक तरीके का और कर सकते हैं कि इसको इंटरनेट पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। वाई वी वेयर एंड बाय, where and why we use, where and why we use where function, where function in, why and where we use where function in SQL। हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं? The where clause in SQL is a very fundamental part of the query filter records। अच्छा, where हम यूज़ करते हैं ताकि हम फिल्टर कर सकें रिकॉर्ड्स को, and extract only those rows that meet a specific condition or set of conditions। It is standard component of SQL. It is a standard component of SQL that meets a specified condition or set of conditions। कहाँ पे यूज़ हो सकता है? Select product name, price from products where price greater than 0। नहीं नहीं नहीं, ये वाला है। तो इसमें कह रहा है कि यार select most common way to use retrieving specific rows। अच्छा, from specific rows जहाँ पे जेंडर एम है, क्योंकि एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई एग्जीक्यूट किया, क्यूरी का क्या रिजल्ट है? हाँ, आधा मसला हो गया। स्टार्ट एग्जीक्यूट लाइन 1, स्टेट लाइन 2, इसमें जेंडर का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, हमने इस फ्रॉम को तो इसमें लिखा है ना, क्यों ना इसको शिफ्ट से, हाँ एक मिनट, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, नीचे आएंगे, कंट्रोल वी, अब इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है।
अब ये जो है, ये क्योंकि एक कॉमा इधर क्यों लगा है? ये कॉमा का इशू तो नहीं था। यहाँ पे कॉमा का इशू तो नहीं था। एक मिनट, उस पर एक और दफ़ा करके चेक करते हैं ना, कि मतलब ये फ़िल्टर मैंने सेंटर में क्यों हुई, इसने एक्सेप्ट नहीं की इसको। तकलीफ़ इसको क्या हुई, सज्जन को क्या तकलीफ़ है? एक मिनट, कंट्रोल इसको वी कर दिया। ठीक 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 ठीक, वो कह रहा है कि यार जब भी आपने फ़िल्टर लगाना है तो आपने डायमेंशंस का नाम लिखना मस्ट है। चलो ठीक है, खैर है जी, खैर है। फॉरवर्ड के हिसाब से चलेंगे हम भी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब ठीक हो गया है, अब लाइनें ख़त्म हो गई हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट ई। यस, 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 यस। ये हुआ जी, ये हुआ। तो हमारे पास उसने उन उन जो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर्स की कीज़ दी हैं, जो सारे क्या हैं, मर्द हैं, मेल हैं, मेल मेल। जियो। अच्छा, तो अब क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी हेल्प हो गई थी, तो इसी के लिए तो हम बैठे हैं। तो पहली क्यूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सेव होता रहेगा। पहली क्यूरी ये है। तो अब इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको इसी पे सेव करूं, या इसको इधर कहीं सेव करने का ऑप्शन हमें सिखाया गया था यार। खैर यार, ये तो सेफ ही रहेगा। अच्छा, तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि यार सेलेक्ट हमने करना है उस स्पेसिफिक कॉलम को, कस्टमर की के कॉलम को, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर को, ठीक है। फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम किससे, उस टेबल का नाम, और उसके बाद उसका जेंडर, एक फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर ये है कि भाई जेंडर जिनका मेल हो। तो अब ये करेंगे कि इसको पूरी तरह करेंगे कॉपी, कॉपी से इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करेंगे और ये आएगा पेस्ट, ये आएगा पेस्ट, ठीक है। ठीक है ठीक है, आ गया आ गया। अब ये इधर, ये एक मिनट, ये चीज़ है, इसको हटाते हैं। अब जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि यार एक दफ़ा ये मेरा से ना हुआ हो, ठीक है। अब स्टार्ट से सवाल ये है कि यार बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहे हैं, तो आई वांट टू लुक एट ओनली द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। आई वांट टू लुक एट ओनली द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, दिस एक क्वेश्चन ये है। I want to look at only the specific group of customers before making any decisions. Before making any decisions, task from the dimension customer table, return customer key, first name, last name, gender, but only for customers where gender M, and the rules are only use select from and where. No grouping yet. Write the query live, explain your logic, send it here when you're done, and I will review it and move us forward. Okay. तो सवाल ये है कि आई वॉन्ट टू लुक एट ओनली द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। वो कस्टमर्स डायमेंशन टेबल से, और कॉलम्स ये हैं, और वो कह रहा है कि यार वो लोग जो कि मेल हैं, ठीक है। और रूल ये है कि भाई सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर को यूज़ करना है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, इसकी क्यूरी लिखते हैं दोबारा से ताकि प्रैक्टिस हो। सेलेक्ट, नहीं, फ्रॉम डिम डिम कस्टमर, फ्रॉम डिम कस्टमर सेलेक्ट कस्टमर की, कस्टमर की कस्टमर की फर्स्ट, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट
also gender without a comma. Okay, and then where 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 gender is equals to m, नहीं डबल नहीं, सिंगल m, कंट्रोल शिफ्ट ई। तो ये रन हो गया, ये रन हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे कॉपी, कॉपी इधर से इधर आओ, पेस्ट करो, इंटर। 100% राइट। ठीक है। Why this is solid, tell your audience. Select chooses the column you care about. From defines the data source. Where filters the rows, not columns. ये important है. This is important because the where filters the rows, not columns. M is correctly treated as string value. Okay. This is objective filtering work in real business analysis. Real business analysis में भी यही होता है। ठीक है। चलो गुड हो गया जी। इसको अब करते हैं मिस। ओके। अब क्या है, numeric logic. Question 2 is where plus numeric logic business context. I want to focus on customers with high purchasing power. Question 2, I want to focus on customers with high purchasing power. Task, dimension from dimension customer table, show customer key, first name, last name, yearly income. Only include customers where yearly income is greater than 50,000. Rules, select from and where. Write the query and send it where ready. इसमें कह रहा है कि भाई मैं फोकस कर रहा हूँ उन कस्टमर्स पर जिनका जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और मैंने करना ये है कि आपको टास्क जो मिला है वो ये है कि भाई टेबल डायमेंशन कस्टमर का जो टेबल है उधर से आपने जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो है कस्टमर की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईयरली इनकम, और सिर्फ उनको इंक्लूड करना है जहाँ पे ईयरली इनकम जो है वो 50,000 से ग्रेटर है। रूल्स ये हैं कि भाई सेलेक्ट फ्रॉम वेयर करना है, अभी ग्रुपिंग को टच नहीं करना, और अपनी क्यूरी लिख के यहाँ पे सेंड कर दो। तो खैर क्यूरी लिखते हैं अभी। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं अपना अपना ट्रिक लिखूंगा। ट्रिक जो है वो है फ्रॉम, फ्रॉम किससे, डायमेंशन कस्टमर। ठीक है, गुड हो गया। क्लियर कर, टच कर, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, अब इधर आके सिलेक्ट करना है फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर। ठीक है, मतलब इस टेबल से मैंने सिलेक्ट करना है क्या, सिलेक्ट, सिलेक्ट व्हाट, कस्टमर, कस्टमर की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईयरली इनकम को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद क्योंकि फिल्टर का तरीक़ाकार है वेयर, वेयर वेयर yearly income is a greater, how do you sign it, greater, this one, greater than 50,000। आई थिंक जस्ट कॉमा नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, कॉमा के बारे में टची है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ई, it's done. This is the formula. Select customer key, first name, last name, yearly income, no commas, no commas, no commas, no commas, and that's it. It's done. Customer key select. Now we're gonna paste it. Copy, paste,
Nice. Correct again. Nicely done. Why this matter? Great point for your stream. Yearly income is a numeric column, so no quotes. Quotations हमने यूज़ नहीं किए, comparison operators इस्तेमाल किए हैं. And this kind of filter is extremely common. Now, why this matters? Great point for your stream. Yearly income is numeric, so no quotations, comparison operators worked as expected. This kind of filter is extremely common in customer segmentation, market analysis, sales targeting. You are doing real analyst work here now. तो ये कह रहा है कि यार जो मैटर क्यों करता है कि भाई ईयरली इनकम, क्योंकि एक न्यूमेरिक का वो है, कॉलम है, तो उसमें कोई वो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह कुछ नहीं लगाने, उसके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं जो कि चल गया एक्सपेक्टेड. और इस तरह के जो फिल्टर्स होते हैं वो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन में, मार्केट एनालिसिस में, सेल्स टारगेटिंग में. और यहाँ पे अभी आप रियल एनालिस्ट का काम कर रहे हो. मेहरबानी. And now the moving back to the coming to the next question. First aggregation. Question 3. Question 3. Group by first aggregation. Now we step it up slightly. Business context. I want to understand how many customers we have by gender. Task. From dimension customer table, return gender, number of customers for each gender. You will you will use select from group by. You will need an aggregate function, nowhere or having yet. Okay, take it slow, think it through and write the query live. तीसरा सवाल है कि भाई हम थोड़ा सा इसको स्पीड को बढ़ाएंगे, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे सवाल को. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि यार मुझे ये समझना है कि यार हमारे जितने कस्टमर्स हैं उनमें जेंडर क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल मेल फीमेल. तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे पास मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है. ठीक है. तो उसके लिए वो ये भी बता रहे हैं कि भाई आपने करना क्या है. आपने कस्टमर से डिम कस्टमर से रिटर्न क्या आना चाहिए, जेंडर और नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर ईच जेंडर. और ये ठीक है. रूल्स ये हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम और ग्रुप बाय यूज़ करना है. यू विल नीड एग्रीगेट फंक्शन. इसमें एग्रीगेट फंक्शन आपको चाहिए. आराम से सोचो और इस क्यूरी को लाइव लिखो. चलो जी, सोचते हैं. लेकिन सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता करनी है कि यार ग्रुप बाय क्या होता है. वाई वी यूज़ ग्रुप बाय इन SQL. Why we use group by function in SQL. The SQL group by clause is used to organize rows with identical values in specified columns into a single summary row, enabling the application of aggregate function like count, sum, average, min, and minimum and maximum to perform calculations of each group. Purpose and function. The primary purpose of using group by are data aggregation. It allows you to transform detailed row level data into summarized views. For example, instead of seeing every single sales transaction, you can use group by to see the total sales per product or the average salary per department. Categorization. It groups related records based on one or more common values. For example, grouping customers by country, employees by job title, or websites visit by date. Summarizing large data set. For large tables, group by helps in condensing information, reducing number of rows to make the data more manageable and insightful for analysis and reporting. How it works, and it is also giving you an example. Let's see from an example. AS. Mm. When you use group by grouping, the database engine collects all the rows that have the same values in the specified group by columns and forms a group for each unique combination. An aggregation function, for example, sum count, is then applied to the data within each of these non-grouped columns, producing a single summary value for each group. For example, consider a sales table with product and revenue columns. Typical example: product laptop, monitor, laptop 1200, monitor 400.
To find the total revenue for each product, you would use select product, this column, sum of this revenue. It will be total revenue from which table? Sales table. Group by what? Products. Laptop का okay. All right. The query returns a summarized result: products, laptop, monitor, total revenue, this. Key clause use: where filters individual rows before they are grouped. Having filters result after data has been grouped and aggregated. This is why we an order by. Group by. Okay, group by products. Okay. Now I think so. I got an idea of how to do it. Let's do it. तो इसमें थोड़ा सा हमने इसको सीख लिया कि ग्रुप बाय यूज़ क्यों होता है। ग्रुप बाय इसलिए यूज़ होता है कि भाई जो आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं किसी भी स्पेसिफाइड, जिसको आपने स्पेसिफाइड किया हुआ है कॉलम को, उसको सिंगल एक समरी रो में उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो उससे ये होता है कि एग्रीगेट फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो यार, इसको ट्राई करते हैं अब। समझ आ गई है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। अब जाते हैं एसक्यूएल चैलेंज में। चैलेंज हमारा क्या था? दिस वन। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम, जो मुझे आता है फ्रॉम। Customer, you select what? Select gender. Select gender and no. This is the query I have come up with. Let's try it. Control 50. No, it's wrong because the query is right. लेकिन ये तो गलत आ गई है। गलत आ गई है। It's wrong. ये तो सिर्फ जेंडर कह रहा है कि ग्रुप बाय, इनको जेंडराइज किया। अब वापस ज़रा एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या था? सेलेक्ट प्रोडक्ट, इसको चेक करते हैं ना। फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर, फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर सेलेक्ट सेलेक्ट जेंडर। ओके, तो ये किस तरह आ रहा है? हाउ इज इट गोइंग? वेल फीमेल। ओके, नाउ सेलेक्ट जेंडर कॉमा सम
सेलेक्ट प्रोडक्ट ये है, सम रेवेन्यू ये है, रेवेन्यू को सम करना है, एज टोटल रेवेन्यू, एज एलियासेस यूज करने थे, फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ आइडिया है, आइडिया लगाते हैं, आइडिया ये इससे देख के ना, सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, जेंडर तो यही है, जेंडर कॉमा सम, सम जब किया तो फिर सम, नहीं, सिंगल कोटेशंस, एम, कैपिटल एम, और एस, एस और व्हाट वाज आवर टारगेट, मेल्स, टोटल मेल्स कॉमा सम सम, ये फीमेल्स एज टोटल, कंट्रोल शिफ्ट, फर्स्ट लाइन में गलती हुई, समझ क्यों नहीं आ रहा यार। ओके, एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल दी तो नंबर है ना, ये तो न्यूमेरिक है, इसी वजह से ये काउंट हुआ है। तीन प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम में प्रोग्राम खराब हुआ है। टोटल मेल्स, इन्होंने कॉमा तो नहीं लगाया, नहीं हमने तो कॉमा नहीं लगाया, अब भी मसला है, अब भी अगर रन करो इसमें मसला है, सिंटेक्स में ही मसला है। सिलेक्ट जेंडर, अब ये टाइम कितना करते हैं, अच्छा बस यार इसी को करते हैं, कॉपी पेस्ट, this is a great attempt. I really glad you tried it live because this is a classic learning moment. Let's walk it through calmly like a business plus interview situation. Why this query is not correct? Important. You wrote select gender from dimension table, from the customer table. Select the gender and sum the males as total males, sum the females as total females. There are three issues here. Some male and some female doesn't make sense. I know. M and F are strings, not numbers. Okay. Some only works on numeric columns. Makes sense. SQL can't add letters. Okay. So what should we do? You didn't use group by. Okay. You selected gender, but whenever you use aggregate functions, sum, count, etc. Now every non-aggregated column must be in group by. This is core SQL rule. Wait a minute, I didn't get it. You didn't use group by, you selected gender. Okay. But whenever you use an aggregate function,
New use aggregate function. Every non-aggregated column must be grouped by. Okay, non-aggregate. This is core SQL rule. The business question is simpler than your approach. The stakeholder are how many customers do we have in each gender? That means count rows and group them by genders. Correct way to think about is say on this stream we are not counting males and females separately with the sum. We are counting customers grouped by gender. Okay, I got it. So the correct query is this is the answer. Select gender, count all of the rows as total customers from dimension table and group by gender. It was also grouped by gender now, which I forgot to use the group by here. Okay, why this works, very important explanation. Count all the rows and group by groups them by gender, creates one row per gender, results look like male female. This is how exactly business ask this question. Interview level tip, goal for your audience. If the business question starts with how many, your brain should immediately think count. Okay, learning tip. It's a great learning tip. Let me write without looking at, because now that I have learned it, let's type it here again. From dimension from the customer table, select 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 gender, comma, count count all rows count all the rows is total customers. customer customers. ओके, अब यहाँ पे आके ग्रुप बाय ग्रुप एंड नाउ आप सारे रोज को काउंट करो. यू हैव टू काउंट ऑल द रोज एंड देन ग्रुप बाय जेंडर. Control Shift E. Still a error. Okay, total customers, you have to write it together. Right, otherwise it's same. You just have to end it with this. तो हमसे गलती ये हुई है कि उसने समझा दिया हमें. हमारा अप्रोच गलत इस वजह से था क्योंकि एक तो कैरेक्टर्स को एसक्यूएल सम नहीं कर सकता है, डजंट मेक सेंस. और उसकी बात भी ठीक है. उसके बाद कहता है ये स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सम का फंक्शन है वो सिर्फ काम करता है न्यूमेरिक कॉलम्स में, और एसक्यूएल जो है वो लेटर्स को ऐड नहीं कर सकता. ठीक है. यू डिडंट यूज ग्रुप बाय, आपने ग्रुप बाय यूज़ नहीं किया. ठीक है. यूज सेलेक्टेड जेंडर, आपने जेंडर को तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन ग्रुप बाय आपने यूज़ ही नहीं किया. तो वो कहता है कि यार जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हो जैसे सम काउंट वगैरह, तो जो भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होता है तो उसको आपने ग्रुप बाय करना होता है. ठीक है. जिसको आप एग्रीगेट कर सकते हो ना, अगर किसी भी को जिसको भी आप एग्रीगेट जैसे प्लस माइनस एवरेज काउंट मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो, तो जो नहीं हो सकते जैसे ये एफ फीमेल और मेल है, इसको फिर आपने ग्रुप बाय के जरिए करना होता है. दिस इज अ कोर एसक्यूएल रूल. द बिजनेस क्वेश्चन इज सिंपलर देन योर अप्रोच. आपके अप्रोच से ज़्यादा सिंपलर है. उसने कहा था कि कितने कस्टमर्स है हमारे पास, कितने कस्टमर्स है बाय जेंडर, जेंडर के हिसाब से हमारे पास कितने कस्टमर्स है. उसका मतलब ये है कि भाई आपने रोज़ को काउंट करना है और फिर उसको ग्रुप बाय जेंडर, सारे रोज़ को काउंट करो और फिर उनको ग्रुप बाय कर दो, तो फिर आंसर आपके पास आ जाएगा. स्मार्ट. अब करेक्ट वे तो क्या है, आप अपने स्क्रीन पे बोल सकते हो कि भाई हम हमारे को सेपरेटली काउंट नहीं कर रहे सम के साथ, हम काउंट टोटल कस्टमर्स को काउंट कर रहे फिर उसको जेंडर से
तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये इस तरह काउंट, ये फार्मूला था, ये हमने सीखा। सेलेक्ट जेंडर एंड काउंट एज टोटल कस्टमर्स फ्रॉम डायमेंशन टेबल एंड ग्रुप देम बाय जेंडर। ठीक है, अब ये एक टिप वो दे रहा है, वो कह रहा है कि यार आपके लिए, अगर आपका बिजनेस क्वेश्चन कभी भी हाउ मेनी से स्टार्ट होगा ना, हाउ मेनी, तो तब आपने हमेशा काउंट को सोचना है। काउंट, ठीक है। ग्रुप बाय एंड वेयर। नाउ क्वेश्चन 4, let's log this in with a clean follow-up. Business context. Now show me the number of customers by gender, but only customers who earn more than 50,000. Use where to filter and use group by to aggregate. Write the query when ready. This one ties everything together. Okay. सवाल ये है कि ग्रुप 4, क्वेश्चन 4 है, उसमें ग्रुप बाय और वेयर को यूज़ करना है। अब ये कह रहा है कि यार इसको लॉक करते हैं विद ए क्लीन फॉलोअप, किसी क्लीन फॉलोअप के साथ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि शो मी, ऐसे कस्टमर्स मुझे बताओ, पहले तो कस्टमर्स मुझे बताओ जेंडर के हिसाब से, नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय जेंडर, और उसके बाद सिर्फ उन कस्टमर्स का मुझे रिजल्ट दिखाओ कि जो कि 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने यूज़ करना है वेयर टू फिल्टर और ग्रुप बाय टू एग्रीगेट। ठीक है, लेट्स डू इट। अब इधर आके क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में यह है कि फ्रॉम फ्रॉम डायमेंशन customer, from a, you can say customer table, select, from customer table select, select gender. Okay, first count, count, we have to count सारा करना है, उसके बाद count सारा as total customers. Okay, gender, correct sentence. Okay, control X, control V. It is saying that it's everything is right, but there is some problem with the context here. Who earns more than? Greater than, less than? It should be, no? Okay. I think everything is right here. Even the group buy is good. But SQL query.
where the quantity select quantity greater than 10. No, 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 no. Now let's write it to them where I am having a problem. Copy. Now this says because I am wrong and I think so I am missing a point here. Now what does ChatGPT says? Your structure is right, but you're missing one small but important piece. This is exactly how learning should look like on day 3. What's wrong, quick and clear? You wrote 15,000. Where clause is missing the column name? SQL needs to know what is greater than 50,000. Okay. The correct version. Since the business rule is about income, the column is yearly income. Where yearly income. Okay. So this was the problem which resulted in the error. Okay, now the query is 100% correct. Why this works? Where nearly income is greater than 50,000 filters the rows before grouping them and then groups by gender, creates one group per gender and it counts all the customers in each group. This order of thinking is critical in SQL. Filter first, then group, then aggregate. Filter first, then group. Big learning moment, important concept. Where filter rows, group by group rows, count every sum, calculate on those groups. If you already understand this, they are already ahead of many beginners. Okay. So we had to change it. Uh, this one. Let's rewrite it again. Select gender, count, is total customers
wrong. There is an error which has occurred. Line 1. Zero rows effective. Everything is right. There seems to be a problem with what? I started. Copy. Reserved for query of question 4. Perfectly, I'm really great. Your SQL was correct. Your SQL was correct. The query itself was properly getting 0 rows affected. Doesn't mean your SQL is wrong. What is this result actually means? Business explanation. Based on your current data, there are no genders where customers are earning more than 50,000 in sufficient numbers to form a group. In plain English, the filter yearly income greater than 50,000 removed most rows. After grouping by gender, no groups had rows left. So SQL returned 0 rows. This is a data reality, not a syntax problem. Okay. How to verify this live? Great debugging habit. Check if high income earners, high income earners customers exist at all. High income earners exist at all. If it returns 0 or a very small number, then mystery is solved. Okay, so this means there is no problem with the syntax, but rather there are either the number of people who are earning a high income are low, that it is insufficient to form a group. Okay, now I will check it out. Select count. Select count is high earners from dimension customer where yearly income greater than 50,000. Okay, Control Shift E, high income earners. Okay, so it is this. See income distribution. This gives us correct your important lesson. A correct SQL can return 0 rows, not a failure. This is inside. Now the high income earners. Okay. High income earners. High. This. The result. The result I got after. The result I got after step 1. Step 1 query is 9858.
and it's perfect 985. It is a great number to see. This actually confirms everything. Your SQL thinking is on track. What this tells us very important. Step 1, select count as high income results. This means that there are high income earners. So zero rows affected earlier was not because the data, it was because how the data was grouped by gender. There is a data inside node mistake. Why question 4 returns zero rows affected? Your question 4 logic was filter customer where yearly income 50,000. Group them by genders. Now imagine this as a business interpretation. We have 9,085 high income customers, but when grouped by gender, no single gender survives the filter, or the gender might be even null. This happens in real project all the time. SQL did exactly what you asked. Big analyst lesson. Say this clearly on stream. Zero rows doesn't mean zero data. It means zero results for that specific business question. That is mature SQL thinking. तो अभी ये हुआ कि जब क्वेश्चन 4 को जब मैंने किया तो मेरे पास ये रिजल्ट है ज़ीरो रोज इफेक्टेड लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई गलती है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी ने कहा नहीं, कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये कि भाई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता या नंबर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, चैट जीपीटी की तरफ से ये कहा गया। तो फिर मैंने उसको फिर उसने खुद मुझे बताया कि भाई अगर आपने फिर भी चेक करना है, आपको तसल्ली करनी है, तो फिर आप ये फार्मूला लगा दो, ये क्यूरी लिख दो। ये क्यूरी मैंने जब उधर लिखा तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 9858। तो ये 9,000 बंदे हैं। अब मैं फिर और परेशान हो गया। तो मैंने उसको कहा कि यार ये तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो तो ये आ रहा है। तो फिर उसने कहा कि यार ये एक अच्छा नंबर है, इसका मतलब ये कंफर्म करता है योर स्किल थिंकिंग इज राइट ऑन ट्रैक। फिर भी मुझे समझ नहीं आई। तो वो कहता है कि यार इसका मतलब ये है कि भाई हाई इनकम अर्नर्स तो हैं तुम्हारे डेटा में। सो जीरो रो इफेक्ट जो अर्लियर उसने कहा था उसका मतलब ये नहीं था कि भाई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी एक पॉइंट है। इसका मतलब ये कि भाई जो डेटा था ना उसको जब आपने ये जो जीरो रो इफेक्ट है वो तब हुआ है जब डेटा ग्रुप किया गया है जेंडर के वाइज, जेंडर के हिसाब से। तो ये दैट्स अ डेटा इनसाइड नॉट अ मिस्टेक। ये जो है ये डेटा इनसाइड है, एक मिस्टेक नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये है कि वाई क्वेश्चन 4, जो क्वेश्चन 4 है उसने रिटर्न किया जीरो रोज अफेक्टेड। तो वो कहता है कि यार जो क्वेश्चन 4 का लॉजिक था उसमें ये था कि पहले हमने फ़िल्टर किया कस्टमर्स को बाय ईयरली इनकम 50,000 की, उसके बाद हमने उनको ग्रुप बाय किया जेंडर से। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब सोचो बिजनेस इंटरप्रिटेशन में ये किस तरह है। हमारे पास 9,858 हाई इनकम और कस्टमर्स हैं। ठीक है। लेकिन जब हम उनको ग्रुप करते हैं जेंडर के हिसाब से तो कोई भी जो सिंगल जेंडर ग्रुप है ना वो सरवाइव नहीं कर पाता फिल्टर्स को। ठीक है। तो ये होता रहता है रियल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि एसक्यूएल ने वही किया जो तुमने उससे पूछा था। तो उसमें एक और चीज़ उसने कहा कि यार आपने सबको बतानी है, वो ये है कि भाई जीरो रोज डजेंट मीन जीरो डाटा। Zero rows doesn't mean zero data. It means zero results for that specific business question. That is mature SQL thinking. अच्छा, ये लर्निंग है। मतलब ये भी एक बड़ी लर्निंग है कि यार अगर जीरो रोज इफेक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीरो डेटा है। ठीक है। Now if this is a great interpretation. This is a great learning. Zero rows affected doesn't mean that there is zero data. Now question 5. Okay, question 5. Question 5. Having core concepts, business context. Show me genders where the total number of customers is greater than 100. Rules. Nowhere use group by having. Take your time, write the query down, write the query live, send it when ready. This one separates syntax users from SQL thinkers. सवाल ये है क्वेश्चन 5 कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हैविंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको चेक करने के लिए उसमें कहता है कि मुझे आप वो जेंडर्स दिखाओ। शो मी जेंडर्स वेयर द टोटल नंबर, जहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। शर्त ये है कि भाई आपने, कंडीशन ये है कि आपने वेयर यूज़ नहीं करना, ग्रुप बाय और हैविंग यूज़ कर सकते हैं। आप अपना टाइम लो, सोचो, जब इसको लिख दो तो फिर इसको मुझे सेंड कर देना। तो अभी ये हो गए हैं
It is 9:47 now, and I will try to think about it for like 10, and after that I'm gonna be asking ChatGPT. Okay, 13 minutes. 13 मिनट रहते हैं तो 13 मिनट ठीक है, 13 मिनट तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं इसको. And having are used for filtering aggregated data, whereas where is used for filtering individual rows before aggregation occurs. The key distinction is their purpose and the stage in the query execution process where they operate. It is not generally possible to use group by and having as direct substitute for where they serve different purposes. Fundamentally different purposes. Where filters individual rows before they are grouped together and aggregated. Having filtered groups of rows after they have been grouped and aggregated. Have one specific scenario using having subfilter. Customs.
answer this question, question 5, what I did was I selected the gender. I used this query where I selected the gender and then I count all of them as total customers, and then from the customer table from the customer table, and then I group them by gender and having. In this regard, I have used having instead of the where filter. Okay, and having count gender greater than 100. Now this is the answer which I am getting. Now I the query is not wrong. It ran perfectly. There were no errors. Now let's ask ChatGPT whether I am correct or not. तो अभी हमने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट जेंडर किया, इसको काउंट किया, ठीक है, एज अ टोटल कस्टमर, एलियस करके ना इसको कस्टमर कर दिया। उसके बाद उसको कौन सा टेबल था, डायमेंशन, और जो कस्टमर का टेबल था वहाँ से, और फिर हमने उसको ग्रुप बाय किया किससे, जेंडर से। और इसमें वेयर की जगह एज अ फिल्टर हमने हैविंग को यूज़ किया है। हैविंग क्या है, काउंट किस चीज़ को, जेंडर को ग्रेटर देन 100। और जब हमने इसको रन किया, ये रन हुआ, ठीक है, नो वरीज, ये रन हुआ। लेकिन अब ये है कि आया, ये जो रिज़ल्ट आया है ये वही रिज़ल्ट है जो वो जो क्वेश्चन की डिमांड है, या ये कुछ और आया है, ये भी हमें चेक करना होगा। कॉपी पेस्ट। Congratulations, excellent, this is a strong, correct day 3 answer. Your query works, your logic is sound. Select gender, count as total customer from dim customer, group by gender, having count gender greater than 100. Why this is correct? Because group by gender creates one group per gender. Okay, group by creates one group per gender. Then you count the gender, then count the rows where gender is not null. Okay, having count gender greater than 100 filters after aggregation. This satisfies the business requirement perfectly. Small professional upgrade, optional but worth mentioning on stream. Most SQL professionals prefer this version, having count star greater than 100. I would have also done that. Why count star rows all the groups, counts all the rows in the groups. It avoids subtle issues of gender, contains null values. It is more clearer and more standard. So the best practice version is, okay, your version is not wrong, but just this is just polishing. Okay, no, I would have gone with this by having the count greater than 100, but my version is not wrong, so yeah. The key day 3 takeaway says this say this clearly. Where filter rows before grouping, having filters group after aggregation. Okay, if your audience understands that, then day 3 is a win. Okay. Now today, Alhamdulillah, we have successfully completed select from where, group by, and having. Most importantly, you debugged result and better business meaning, didn't panic at 0 rows, thought like an error. That is real progress. Whenever you are ready for the next session, just say day 4 is on. Where or in between. Okay. Now, friends, this is it. This is it. तो अभी ये है कि जब मैंने इसको लिखा तो इसका रिज़ल्ट आया था, और उसको मैंने शेयर किया चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी के साथ इसको मैंने शेयर किया, और चैट जीपीटी ने मुझे कहा कि आपका क्यूरी जो है वो काम कर रहा है, लॉजिक भी खूबसूरत है, और आपका ये काम करेगा। और ये कहता है कि भाई ग्रुप बाय जो आपने जब जेंडर को किया तो उसका मतलब ग्रुप बाय, इसका मतलब वो हर जेंडर के लिए एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है।
उसके बाद काउंट जेंडर, जो काउंट जेंडर का मतलब ये है कि भाई वो रोज को काउंट करेगा जहाँ पे जेंडर नॉट नल। ठीक है, नॉट नल का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, मेल या फीमेल लिखा हुआ है। उसके बाद हैविंग काउंट जेंडर, इसका मतलब ये है कि भाई वो फिल्टर कर रहा है एग्रीगेशन के बाद जिसने बिजनेस रिक्वायरमेंट को परफेक्टली सेटिस्फाई किया है। लेकिन एक प्रोफेशनल एफिलिएट उसने बताया, उसने कहा कि भाई यहाँ पे जहाँ पे तुमने जेंडर लिखा है ना, इसको तुमने स्टार लगा के ध्यान करना है। प्रोफेशनल सारे लोग यही करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इसमें यह होता है कि जब काउंट स्टार आप लगाते हो तो वो हर रो को काउंट कर रहा होता है। और ये जो सटल इश्यूज होते हैं जेंडर में, अगर उसमें नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इट अवॉइड सटल इश्यूज वेयर, अगर जेंडर में नल वैल्यूज़ अगर आ गई तो उससे थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो फिर भी इसको ज़रा इधर लिख के ना स्टार लगा के चेक करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस वर्जन में ये है कि आपने स्टार लगाना है। तो की टेकअवेज आज के उसका ये है कि आज के प्रैक्टिस का, वेयर फिल्टर्स रोज बिफोर ग्रुपिंग, हैविंग फिल्टर्स ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन। वेयर जो है वो फिल्टर करता है रोज को ग्रुपिंग से पहले, और हैविंग जो है वो फिल्टर करता है ग्रुप को एग्रीगेशन के बाद। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना कि मतलब वेयर जो है ना, जब आप ग्रुप करने से पहले अगर आपने फिल्टर लगाना है तो आपने वेयर लगाना है। अगर आपने ग्रुप कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, उसके बाद अगर आपने फिल्टर लगाना है तो फिर आपको हैविंग यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई डे 3 कंप्लीट हो गया है और आपने ये पांचों के पांचों कर दिए हैं। इट्स अ सक्सेस। तो अभी एक एक्स्ट्रा के तौर पे ये कर लेते हैं, स्टार स्कीमा। नहीं नहीं, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है, लेकिन करेंगे हम यही। ठीक है, तो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि 3 more questions, 3 more, 1 more question, 1 more question for today, please. Day 3, please. एक और सवाल, फाइनल सवाल। Love the energy, alright, one final day, clean, sharp, perfect, and close the stream strong. Or, yeah, we have hit the plan. Uh, Now I'm asking for one more question from ChatGPT. Alright, one final day 3 question, clean, sharp, and perfect to close the stream strong. I'm back in business stakeholder mode. Final question. Day 3, where plus group by plus having. Business context. I want to understand our customer base better. Show me genders where the average yearly income is greater than 60,000. Okay, this is the task. My task is from doing a return. My task is from the customer table return gender and the average yearly income by giving it a meaningful alias. Okay, rules: use only select from group by having, nowhere needed, think about why. Okay, take your time, write it live, explain your thinking, send the query. This is perfect day 3 finale. Okay, तो मैंने कहा यार एक और सवाल पूछ लें। तो ये फाइनल सवाल है, फाइनल सवाल है डे 3 का। इसमें वो कहता है कि यार हमने मैंने अपना बिजनेस, अपना कस्टमर बेस जो है, अपना डेटा का जो लोग मेरे साथ ऐड हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो मुझे कहता है कि तुम मुझे जेंडर्स बताओ, शो मी जेंडर्स, मुझे जेंडर्स दिखाओ जिनका जो एवरेज ईयरली इनकम है वो 60,000 से ज़्यादा है। एवरेज ईयरली इनकम क्या है? 60,000 से ज़्यादा है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपने टेबल में जाना है, आपने रिटर्न करना है कि इसको जेंडर को, एवरेज ईयरली इनकम को, और उनको एक मीनिंगफुल एलियस देना है आपने। ठीक है, आपने उनको एक मीनिंगफुल एलियस देना है। रूल्स ये है कि यूज़ ओनली सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय हैविंग, और नो वेयर नीडेड, वेयर इसमें नहीं चाहिए। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। आपने इसमें वेयर आपको नहीं चाहिए, तो फिर इसको किस तरह करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा सोचते हैं।
I want to understand my customer base better. 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 Show me genders where the average income, yearly income is greater than 60,000. Okay. So many hearts. Okay. Show me the gender where the average yearly income is this. Heaven count. Okay, I want to understand our customer base better. Show me gender where the average yearly income is greater than 60,000. Okay. I want to understand our customer base better. I want to understand our customer base better. I want to understand our customer base better. ठीक है और सबसे पहले तो wrong gender okay I'm wrong here
Now here we are on the last question of the day. Now the now the thing is that after reading the question and looking at my query, I have been able to identify the gender part. I've completed the gender part and also the average yearly income. The problem is I am having a problem with having. Okay, the having as a filter has been a big problem here. Otherwise, the average yearly income is done and it's also greater than 60 days is the problem. Maybe, wait a minute. There is a problem with having. Now this is the problem we are facing. Let's try to execute it. Obviously, it will not be executed. Now let's put it up for ChatGPT to guide us one last time. Okay. Now here's the thing. I am out of luck here because the plane has hit the ChatGPT 5, so we couldn't. Here's the thing. I came up with the query, but the problem is we have hit the max limit today, and hopefully tomorrow we were gonna continue from here. We will be continuing with day 4, and yeah, we will be asking. I will be asking this question tomorrow in the tomorrow session, and we will be able to compensate it tomorrow, hopefully. और इसका ये करना है कि यार इसका ये जो सवाल है जो मैंने क्यूरी लिखी है ये क्योंकि अभी प्लान ख़त्म हो गया है ChatGPT 5 का, तो अब ये ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा, तो फिर अब इस तरह करते हैं कि आज का सेशन ख़त्म करते हैं इधर ही, और ये होगा कि ये जो क्यूरी है ये मैं कल पूछूंगा ChatGPT से, और कल इसको करके फिर हम आगे जाएंगे। तो आज हमने जो सीखा उसका एक अगर ओवरव्यू हम ले लें ताकि एक आइडिया बन सके। तो ये फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वार्म अप वेयर business context. I want to look at only a specific group of customers before making any decisions. Task: from the customer table, return customer key first name, last name, gender, but only for customers where gender is equals to male. Rules: use only select from and where, no grouping yet. Write the query live, explain your logic and send it here. When you are done, I will review it and move us forward. पहला क्वेश्चन है कि वार्म अप के तौर पे पहला क्वेश्चन है, इसमें यह करना है कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का पता करना चाहता हूँ, अब पता करना चाहता हूँ ताकि मैं डिसीजन लेने से पहले स्पेसिफिक ग्रुप मेरे पास कौन कौन सी हैं
उनका मैं पता करना चाहता हूँ। तो उसमें टास्क में हमें डायमेंशन जो कस्टमर टेबल है वहाँ से हमें कस्टमर की चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर चाहिए। और जेंडर सिर्फ उन लोगों का जिनका जो कि मेल है, ठीक है। रूल ये है कि हमने सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यूज़ करना है और ग्रुपिंग अभी यूज़ नहीं करनी। The answer which I have written for the query of question 1 was select customer key first name last name gender from customer table where gender is equals to male। तो मैंने इसका जो जवाब लिखा है पहले क्वेश्चन का वो है कस्टमर की, सेलेक्ट कस्टमर की फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एम। सो इट इज़ करेक्ट, क्लीन एंड प्रोफेशनल, ये ठीक है। Question 2. Where plus numeric logic. Now I want to focus on customers with higher purchasing power. Task from the customer table show customer key first name last name yearly income. Only include customers where yearly income is greater than 50,000. Rules: use select from where, no grouping yet, write the query and send it when ready। दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये है कि मैं एक पर्टिकुलर मैं फोकस करना चाहता हूँ कस्टमर्स पर जिनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कस्टमर टेबल से मुझे कस्टमर की चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईयरली इनकम चाहिए। ओनली इंक्लूड कस्टमर्स ने इंक्लूड करना है जिनका सालाना जो आमदनी है वो 50,000 से ज़्यादा है। रूल ये है कि भाई आप सेलेक्ट फ्रॉम और वेर यूज़ करें, ग्रुपिंग अभी यूज़ ना करें, आप क्यूरी लिखें और मुझे भेज दें। So the query which I used to attempt the second question was select customer key first name last name yearly income from customer table where yearly income greater than 50,000, and the answer was correct and it was nicely done। तो मैंने लिखा क्वेश्चन 2 के लिए क्वेरी मैंने लिखी है सेलेक्ट कस्टमर की फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईयरली इनकम फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर वेयर ईयरली इनकम इज इक्वल्स टू 50,000, ईयरली इनकम ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 Question 3. Group by first aggregation. Now we step it up slightly in business context. I want to understand how many customers we have by gender. I want to understand how many customers we have by gender. Task from customer table return gender, number of customers for each gender. Rules: use select from group by, you will need an aggregate function, no where or having yet, take it slow, think it through, write the query live। तीसरा क्वेश्चन में ये है कि भाई मैंने ये समझना है कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं जेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो टास्क ये है कि वो जो कस्टमर टेबल है वहाँ से मुझे जेंडर आए और कस्टमर्स की कितनी तादाद है हर जेंडर के लिए, ठीक है। और मैं सिर्फ सेलेक्ट फ्रॉम और ग्रुप बाय यूज़ कर सकता हूँ और मुझे सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन चाहिए, मुझे ना वेयर चाहिए और ना हैविंग अभी। So what I write for question number 3 was select gender sum is equal sum bracket male as total male, sum female as total females from dim customer। तो मैंने ये लिखा है क्वेश्चन 3 के लिए सेलेक्ट करो जेंडर को, सम करो मेल को एज टोटल मेल, सम करो फीमेल को एज टोटल फीमेल्स, कहाँ से, फ्रॉम द कस्टमर टेबल। दिस was wrong, the query was wrong, the query was wrong, and the correct query was select gender count star
count asterisk, which means counting all total number all the customers as total customers from customer table, and then grouping them by gender, this was the correct answer. तो इसका जो सही जवाब था या गलत जवाब था, इसका सही जवाब ये था, सेलेक्ट करो जेंडर को और काउंट करो सारा डेटा, और उनको आप रेफ़र करो, उनको कहो कि भाई ये टोटल कस्टमर्स हैं, और उसके बाद वो जो टोटल कस्टमर्स हैं कस्टमर टेबल से, उनको फिर आप ग्रुप करो किससे, जेंडर से। अब ये क्वेश्चन 4, now question 4, group by plus where. Now show me the number of customers by gender, but only for customers who earn more than 50,000. Task: use where to filter, use group by to aggregate data, write the query when ready. This one ties everything together. Select gender. तो क्वेश्चन 4 में ये है कि क्वेश्चन 4 में वो पूछता है कि भाई मुझे नंबर ऑफ कस्टमर्स दिखाओ जेंडर वाइज, लेकिन सिर्फ उन कस्टमर्स का जो कि 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर आपने यूज़ कर सकते हो वेयर को फिल्टर के लिए और ग्रुप बाय को एग्रीगेट करने के लिए। So what I have written in regard to the question 4, select gender, count or total number all the customers as total customer from dimension customer from the table where 50,000, where it is greater than 50,000, group by gender। तो मैंने सेलेक्ट किया, जेंडर किया, काउंट किया, स्टेरिक किया और टोटल कस्टमर्स को देखा फ्रॉम डायमेंशन कस्टमर्स, ठीक है। और फिर वेयर ग्रेटर देन वेयर का फिल्टर लगाया कि 50,000 से ज़्यादा है, और ग्रुप बाय जेंडर। अगर स्ट्रक्चर इज राइट बट दिस इज रॉन्ग, करेक्ट वर्जन इज सेलेक्ट जेंडर, count all of them as total customer from the table customer table where yearly income greater than 50,000, and group by gender, group by equals to gender, and now this query works 100%। अब ये कह रहा है कि भाई जो सही वर्जन है वो यही है कि सेलेक्ट करो जेंडर को और सारों को काउंट करो एज टोटल कस्टमर्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल जिनकी ईयरली इनकम 50,000 से ज़्यादा है, और उसको ग्रुप बाय करो जेंडर से। Filter first, then group, then aggregate। ओके, फिल्टर फर्स्ट करो फिर एग्रीगेट करो। Question 5, the last question of the table, question of the day. Show me genders where the number of high income customers income greater than 50,000 is more than 1,000. Task: use where for income, group by for gender, having for aggregated results. Take your time. The classic where and having question. Whenever you are ready। सो आखिरी सवाल ये था कि फिर मुझे वो जेंडर्स दिखाओ जो कि सबसे ज़्यादा हाई इनकम कस्टमर्स लाते हैं, जैसे 50,000 ज़्यादा कमाते हैं, उनकी तादाद 1,000 से ज़्यादा है। Now the question 5 is having adjusted intermediate results. Show me gender where total number of customers is greater than 100. You have to use group by having where and write the query when rated is one of the most having true test। Okay, अब show me the genders। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे जेंडर्स दिखाओ। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि मुझे जेंडर्स दिखाओ जिनमें टोटल कस्टमर जो है वो 100 से ज़्यादा है। आपने ग्रुप बाय यूज़ करना है, हैविंग यूज़ करना है, और वेयर को यूज़ नहीं करना।
Solve this. I write this query. Select gender count as total customer from customer table. Group by gender having count gender greater than 100. मैंने सेलेक्ट किया, जेंडर किया और काउंट सारे कस्टमर्स का टोटल कस्टमर्स किया, और फिर डायमेंशन टेबल से मैंने ग्रुप बाय किया जेंडर से और हैविंग काउंट किया जेंडर ग्रेटर देन 100. ठीक है, excellent, this is strong, correct. Day 3 answer. Your query works, your logic is sound. Select gender count as total customers. So it was correct. My logic for question 5 was correct. Logic was sound. ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था. और and that is how day 3 was completed successfully. And yeah, I didn't panic, and this was the, और इस तरह day 3 complete हुआ और हमने उसको कर दिया. Thank you friends. At the end, it is the end. और आज hopefully मैंने 2 घंटे complete कर लिए. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to join me in my next sessions, and I will see you next time inshallah. Assalamu alaikum.